नमस्कार। आज शहीद दिवस के अवसर पे मैं अनिल तिवारी आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। ये स्टूडेंट्स का एक सेमिनार हमने आयोजित किया है। इस सेमिनार में हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज पे अपने विचार रखेंगे। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि शहीद दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 30 जनवरी 1948 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी और उनकी पुण्य स्मृति में हम प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मुझे भारतीय राजनीति का जो परिदृश्य है उसमें महात्मा गांधी एक बहुत ही रोचक, बहुत ही प्रेरक व्यक्तित्व दिखते हैं और ऐसा दिखने के पीछे जो मैं सोचता हूँ कि महात्मा गांधी वास्तव में जनता के नेता थे। उन्होंने जब ये तय किया कि अब सिर्फ एक ही वस्त्र धारण करेंगे, इसके पीछे एक गांव की कहानी है जिसमें महात्मा गांधी जाते हैं और उनके कार्यक्रम में किसी एक घर से जिसमें 2 महिलाएं रहती थीं, केवल एक उनके कार्यक्रम में उपस्थित होती है और उनको जब ये पता लगता है कि उस घर में 2 महिलाएं रहती हैं और दोनों महिलाओं के लिए सिर्फ एक साड़ी है उनके पास, एक धोती है सिर्फ उनके पास, तो घर से अगर बाहर जाना होता है तो सिर्फ एक ही जा सकता है वो धोती पहन करके, एक को बिना वस्त्र के घर के अंदर रहना होता है। इस घटना से गांधी जी को इतना दुख पहुंचा, उन्होंने ये तय किया कि हम अब सिर्फ एक वस्त्र धारण करेंगे, तब तक सिर्फ एक वस्त्र धारण करेंगे जब तक हमारे देश के सभी लोगों के पास वस्त्र न हो जाए। और ये जो उनका निर्णय था, इस निर्णय ने उनको भारत के जनमानस में, गाँव में, हर व्यक्ति के दिमाग में एक ऐसी छवि बना दी कि ये तो मेरे घर का बंदा है, ये तो मेरे घर का नेता है, ये तो मेरा है। और ये एक ऐसा जो उनका रूप था, पूरे दुनिया में उस तरह के अगर आप परिदृश्य को देखते हैं, कोई भी आसानी से एक छोटा सा स्केच बनाता है और लोग पहचान जाते हैं कि किसके बारे में बात। दूसरी बात जो महात्मा गांधी की मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, उनका एक विचार जिसमें वो कहते हैं कि शारीरिक श्रम से बचने के लिए जो हमारे मन में प्रवृत्ति होती है, उससे भारतीय समाज में जाति प्रथा को जन्म दिया। शारीरिक श्रम से हम अपने को बचाना चाहते हैं, इस प्रवृत्ति ने जाति प्रथा को जन्म दिया। दूसरी बात कहते हैं कि हम कुछ काम को गंदा मानते हैं और ये जो मानने की प्रवृत्ति है उससे भारतीय समाज में अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी को जन्म दिया। और ये दोनों बुराइयां, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता, भारतीय समाज को एक तरह से खोखला कर रही हैं, ऐसा उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्ताव किया। और हम देखते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। हम गांधी जी के और विचारों के बारे में अगर देखें तो एक वाक्य में उन्होंने अपनी बात कही। जब उनसे पूछा गया कि आप इस दुनिया को कुछ संदेश देना चाहेंगे, तो महात्मा गांधी ने कहा सीधे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ये जो एक नैतिक भावना है, एक संवेदना है, वो ऐसा व्यक्तित्व ही व्यक्त कर सकता है जिसने अपने जीवन को बहुत ही शुचिता से, बहुत ही पवित्रता से जिया हो। आप देख लीजिए हमारे आसपास
पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं, इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो ये कह सकें कि जो मैं जी रहा हूँ मैं वही कहता हूँ, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। या कितने लोगों में ये साहस है कहने का कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, जो मैं जी रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया वैसा जिए। तो मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, एक सूत्र में उन्होंने पूरी बात कह दी। और इस बात को मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी उनकी जो अपनी जीवनी है महात्मा गांधी की, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उसको जरूर पढ़ें। आप महात्मा गांधी के किसी और साहित्य को पढ़ें या ना पढ़ें, आप उनकी जीवनी को जरूर पढ़ें, और तब आपको लगेगा कि ये मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, इसका वास्तव में कितना गूढ़ अर्थ है और उससे आप क्या क्या प्रेरणा ले सकते हैं। तो आज के दिन पर हम महात्मा गांधी को सब लोग श्रद्धांजलि देते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। इस अवसर पे हमारे जितने सहयोगी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, हमारे विद्यार्थी जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। हम इस कार्यक्रम में जैसा कि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से देखा कि उन्होंने अपने कर्तव्य को अपने जीवन में जो कहा वो जिया, और जो जिया वही कहा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। माने उनके मन और वचन और कर्म में कोई भेद नहीं था। इससे प्रेरणा लेते हुए भारत की सरकार ने 1976 में ये तय किया कि हम अपने संविधान में मौलिक अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों की बात नहीं शामिल किए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 1976 की बात है, संविधान सभा में भी ये चर्चा हुई थी कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए। और उस समय चूंकि उस संविधान सभा में आजादी में भाग लेने वाले सब नेता थे, उनको लगा कि कर्तव्य तो हम जानते हैं, कर्तव्य तो हमारे समक्ष स्पष्ट है कि देश को क्या बनाना है, कहाँ ले जाना है, तो इसमें कर्तव्य के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। कर्तव्य हमें क्या करना है ये तो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है वो साफ साफ बताती है कि भारत को हमें एक गणतंत्र बनाना है, एक समाजवादी गणतंत्र बनाना है, प्रभुता संपन्न गणतंत्र बनाना है, एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाना है, लोगों में सामाजिक न्याय की स्थापना करना है, आर्थिक विकास करना है, लोगों में एकता की भावना भरना है, लोगों को स्वतंत्रता देनी है, लिबर्टी देनी है, जितने भी आवश्यक एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जितनी स्वतंत्रता आजादी चाहिए वो देना है, ये सब हमें इंश्योर करना है। तो संविधान सभा में लोगों ने ये सोचा कि इसमें हमको कोई एक प्रावधान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब संविधान लागू करने के 25 से भी ज्यादा साल हो गए तो लगा कि हाँ, लोग तो अधिकारों की बड़ी बात करते हैं और कर्तव्यों को जैसे लगता है कि भूलते जा रहे हैं। और आप देखिए 25 वर्ष में, आजादी के 25 से भी ज्यादा वर्षों में, जब ये अनुभव हुआ कि अब नई पीढ़ी आ रही है और नई पीढ़ी और जो नेतृत्व है उसमें एक तरह से कुछ डाइल्यूट हो रहा है, तो मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता और उसको पूरी तरह से व्यक्त करने की और संविधान का भाग बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। तो भारत के संविधान में 42वां संशोधन कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। पार्ट 4A और जो अनुच्छेद है, आर्टिकल जो है वो 51A है, और उसमें हम 11 मौलिक कर्तव्यों को आज पाते हैं। शुरू में 10 थे और आखिर में एक और शामिल किया गया। हम एक एक करके इन मौलिक कर्तव्यों के बारे में अपने विद्यार्थियों के विचार जानेंगे, उनको सुनना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि जैसे आपके समक्ष हमने प्रस्ताव किया
कि हम मौलिक कर्तव्यों को एक एक करके चर्चा करें। मैं मानवी से अनुरोध करूंगा कि वो इन मौलिक कर्तव्यों के जितने पार्ट हैं, जितने उसमें लिस्टिंग की गई है, उसके बारे में अपने विचार साझा करेंगी। तो मानवी, आपका स्वागत है। आप अपना माइक ऑन करके और अपने विचार हमारे समक्ष रखें। Good morning, everyone. I am Manvi. So today my topic is on fundamental duties. So आप ब्रीफ में आप अपने को इंट्रोड्यूस भी कर दीजिए। आप किस स्कूल में हैं, क्या पढ़ते हैं? जी। okay, sir. So my name is Manvi. I am from Jammu, and my school is School of Economics. And so today my topic is on fundamental duty. Now I am briefing on the fundamental duties. There are 11 fundamental duties in our constitution. The constitution has certain duties, and those duties have been described as fundamental duties. Fundamental duties of citizen have also been enumerated for Indian citizen by 42 Second Amendment Constitution adopted in 1976. Article 51 is contained part 4A of Constitution deal with fundamental duties. The fundamental duties mentioned in Indian Constitution are an integral part of Constitution. These duties were provided by the Constitution in 42 Second and 86th Amendment of Constitution. The 86th of Amendment in 2002, the original 10 duties were then increased to 11 under Article 51A and Part 4A of Constitution in India. Constitution of India, we need to follow our Constitution and should respect our national flag and national anthem, and should follow the ideals of freedom struggle, protect the sovereignty and integrity of our nation, protect of our nation and provide national service when required, should have the spirit of common brotherhood, preserve the culture of our India, protect, generate scientific rationale of our thought, to protect public property, strive for excellence. It is duty of every parent to send their children between 16-14 years to school. It is the moral obligation on citizen to maintain the feeling of and unity among all citizens of the country, that the fundamental duties which are carried out by the citizens of our country. Thank you, sir. जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मानवी। Thank you, आपने sir. जितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी उनके बारे में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया उन सबको, और मैं ये डिस्प्ले भी कर दे रहा हूँ आपके इंफॉर्मेशन के लिए। और आप देखिए कि इसकी जो शुरुआत होती है इस पूरे पार्ट की, उसमें ये फ्रेज जो है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, इस फ्रेज को हम हर फंडामेंटल ड्यूटी के साथ जोड़ करके पढ़ते हैं। तो आप जब प्रेजेंट करिए जिस फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में आप बात कर रहे हो, तो ये फ्रेज जोड़ करके और फिर देखिए कि ये सेंटेंस कंप्लीट होता है इस तरह से। तो ये बहुत अच्छा है शुरुआत। धन्यवाद मानवी। और अब हम अपने दूसरे जो स्पीकर हैं उनको आमंत्रित करेंगे। हमारे दूसरे स्पीकर हैं हार्दिक बेनीवाल। हार्दिक बेटा, अपने को अनम्यूट करके और अपने को इंट्रोड्यूस करो और फिर अपनी बात शेयर करो। गुड मॉर्निंग सर। सर, एम आई ऑडिबल? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। ओके, स्वागत। गुड मॉर्निंग सर। Greetings to all the other faculty members and fellow students who all are sitting besides us, and I want to like to thank Tiwari sir to give us all the opportunity here to speak on the fundamental duties. I have been asked to speak on Article 51A and the part first of the 11 fundamental duties that we have in our Constitution. And as you all can see that sir has also mentioned it in the PPT. What this duty says, it says that we must abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag, and moreover the national anthem. So
I can say that in the modern times, it is one of the duty that has been in the news for most of the contemporary issues. You can see that this duty has threefold parts. First, to abide by the Constitution. Second, to respect the national flag. And third, to respect our national anthem. So let me take you on a journey of all these parts one by one. Let's begin by the first part that says that we must abide by the Constitution. See, we all know that India is a sovereign country and we have our own constitution. And we all can say that it should be our duty to abide by the constitution. But in the modern times, we have seen that many of the persons, many of even the politicians, I can say, they have just torn this basic structure of our constitution by not abiding by a constitution. For example, I can say that during the times of elections, there are so many politicians who just come to vote on the basis of religion and on the basis of castes. Wherever, on the other hand, our constitution says that we are a secular country. So by doing all these things, they violate the basic duty that they are not abiding by the constitution. And you can also see in your recent times or anywhere around you that people not following the laws, people taking bribes. All this is not something that our constitution has taught us. On the other hand, we have some unwanted elements, as we have so many times seen that who all plays with this sovereignty of our nation. And that is again not abiding by this duty. Similarly, a second one that we should talk about is to respect the national flag and we have or the national anthem. I will take both these issues together. See, there was so many controversy regarding the national anthem since 2016 when there were the guidelines to play this national anthem in the Indian cinema halls. There were so many cases that we have seen in which people were beaten or forced out of the cinema halls because they were not standing on the national anthem. Similar case was happened in a school. I read a case study. Let me share it with you. A similar case happened in a school when some students who were standing in the morning assembly were not speaking the national anthem, or I can say were not singing the national anthem when it was played. What the principal do? The principal expelled all those students from the school. These students filed a writ in the High Court, but their case was rejected. They reached the Supreme Court, and Supreme Court said that if they're standing on the national anthem and they're not singing the national anthem, you cannot force them to sing the national anthem because it is violating their fundamental right of freedom of speech. So it is something that you all must see from this perspective as well. Similarly, we have seen during the farmers' protest, some of the students, or I can say some of the unwanted elements came in our society who disrespected our national flag, who again broke some laws, who tried to torn apart the unity, integrity, and sovereignty of India. So it is again something unconstitutional, and we can say that these are the same persons who reached to the Supreme Court when their right was violated. Whenever their right gets violated, they reach the Supreme Court. But they are the same who don't want to abide by their duties. So things don't go like that. If you want that your rights must be enforceable by the law, if you want that your rights must be upheld, then it is your morality to follow the duties that every Indian should follow if he or she is born in our motherland. And as Anil sir has rightly mentioned, that this may be the only reason that our constitutional fathers doesn't include the fundamental duties in the original constitution, because they have seen our freedom struggle, they have seen the independence movement of India, and they knew that these are some basic duties that our Indian culture has inherited in us. And we as a child of our motherland must respect them and must abide by them. Let me finish by quoting one of the Supreme Court judgment again on these fundamental duties, and
why they are not enforceable? Because Supreme Court said that we should abide by them morally, because our tradition teaches tolerance and our practices preaches tolerance and our constitution practices tolerance. So thank you so much, sir. Thank you, Hardik. Thank you very much for initiating the discussion on the fundamental duties. And you have rightly remarked that the first fundamental duty is incumbent on every citizen of India to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. If we see, the ideals of the Constitution are encapsulated in the preamble of the Constitution. So I request all of you to very seriously, very closely look into the preambles of the Constitution to apprehend the ideals which you need to cherish and also incorporate in your behavior. Then the constitutional institutions, starting from the President of India and up to the lower level of institutions, for example, the panchayats, they all are constitutional institutions, and we are supposed to pay respect to these institutions and participate actively in the formation and also functioning of these institutions. If we see our respect towards the national flag, these are the symbols, right? We are Indian citizens, so we have to respect India. भारत का सम्मान करना है. तो भारत का सम्मान हम कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ प्रतीकों को डेवलप किया गया है. तो हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वो देश का प्रतीक है. हमारा जो राष्ट्रगान है वो देश के गुणगान का प्रतीक है. तो देश के प्रति हम सम्मान करें, सम्मान व्यक्त करें, इसके लिए नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम एक प्रतीक के स्वरूप में हमारे समक्ष हैं, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए, अपने सम्मान को दर्शाने के लिए. जैसे हम अपने बड़ों का सम्मान करने के लिए उनका पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं. तो देश का सम्मान कैसे हम करें जब हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश ने हमको इतना सारा कुछ सहूलियत और इतनी सारी सुविधाएं दी हुई हैं, इतना अच्छा वातावरण दिया हुआ है. तो हमें उसकी रक्षा में, उसके सम्मान में हमारे कुछ कर्तव्य हैं. और इसके लिए आप देखिए कि सन 1971 में एक एक्ट पास किया गया था, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971. आप देखिए कि जो मौलिक कर्तव्य बताए गए वो 3 जनवरी 1977 से लागू किया गया. 42वें संविधान संशोधन से उसको इनकॉर्पोरेट किया गया 1976 में, और इसको लागू किया गया 3 जनवरी 1977 से. उसके पहले ही देख लीजिए कि 1971 से ये एक्ट, चूंकि लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कि आप राष्ट्रीय झंडे को कैसे फहराएंगे, उसके प्रति सम्मान कैसे दिखाएंगे, उसके देश के प्रति आप अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करेंगे. तो ये जो दो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, इसने बहुत ही इलैबोरेट गाइडलाइंस दिया कि आप राष्ट्रीय झंडे के साथ क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे. और अगर आप इन संवैधानिक प्रतीकों का सम्मान नहीं करते हैं तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया, जो 3 साल तक हो सकता है या फाइन भी हो सकता है. और इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा अपने सारे विद्यार्थियों को और सारे सहयोगियों को कि वो इस पर्टिकुलर एक्ट को देखें, जिससे वास्तव में हम अपने को ये जागरूक कर सकें कि हम राष्ट्रीय झंडे के साथ कैसे बिहेव करेंगे. जो हम सम्मान करेंगे वो सम्मान के कैसे कैसे तरीके हैं. और इसके अलावा और बहुत सारी बातें उसमें बताई गई हैं कि राष्ट्रीय झंडा जब आप लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे. दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनका भी झंडा लगता है, हमारा भी झंडा लगता है, तो वो किस ऑर्डर में लगेगा इसके बारे में बताया गया है. झंडे के साइज बताए गए हैं कि आप अगर फहराएंगे तो उसका साइज क्या होगा, अगर आप कहीं दीवार पे बना रहे हैं तो उसका साइज क्या हो सकता है, जब आप टेबल पे लगाएंगे तो उसका साइज क्या होगा. ये इस पूरे उसमें लिखा गया है.
तो नेशनल फ्लैग कोड जो डिजाइन किया गया है वो पूरा इसमें मेंशन किया गया है। तो मैं आप सबको मोटिवेट कर रहा हूं और इस एक्ट को आप जरूर पढ़िए, जिससे आपको ये पता लग जाए कि राष्ट्रीय झंडे के प्रति सम्मान व्यक्त करने का मतलब क्या है और आप कैसे करेंगे। जो प्रोटोकॉल्स भारत सरकार ने डेवलप किए हैं उसको आप कैसे फॉलो करेंगे। तो धन्यवाद हार्दिक, आपने बहुत सुंदर ढंग से पहले मौलिक कर्तव्य का बयान हमारे समक्ष किया। और अब हम अपने दूसरे प्रतिभागी पूजा खर्रा से अनुरोध करेंगे कि वो अपनी बातों को हमारे समक्ष रखें। पूजा बेटा अनम्यूट Yes, करके sir. आ जाओ। जी जी, sir. स्वागत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पूजा खर्रा है। मैं राजस्थान से हूँ। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रही हूँ। और आज 30 जनवरी है, जो शहीद दिवस के रूप में हम सब लोग याद करते हैं इस दिन को। और आज के दिन हम मौलिक कर्तव्य के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ इस टॉपिक के बारे में। तो अधिकार एवं कर्तव्य की प्रकृति एवं परिभाषा भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। अधिकार वे अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के मानसिक, भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। और ये अधिकार वे होते हैं जो किसी देश की संवैधानिक विधि में प्रावधानिक होते हैं और संविधान द्वारा ही उसका संरक्षण और पोषण किया जाता है। अतः एक स्थापित विद्यास्तरीय सिद्धांत यह है कि व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण किसी भी देश की मजबूत लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का परिचायक है। अतः स्पष्ट है कि राज्य का दायित्व है कि ऐसी विधियों का निर्माण करे जो मूल अधिकारों का संरक्षण करती हो। किंतु ये भी सत्य है कि बिना कर्तव्य के कोई अधिकार का अर्थ नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर बिना कर्तव्य के कोई अधिकार निरर्थक है। अतः ये किसी भी संविधान का ये नैसर्गिक सिद्धांत बन चुका है कि मूल अधिकारों से असंगत सभी विधियां असंवैधानिक होती है। इसका तात्पर्य है कि जनता के अधिकारों के अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति एवं राज्य को अपने अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करना चाहिए। अतः किसी कारण से संविधान ने न्यायपालिका को राज्य को उसके कर्तव्यों से विमुख होने से रोकने के लिए न्यायिक पूर्ण रूप से शक्ति प्रदान की है। अतः इसी कारण से भारतीय संविधान में राज्य के कर्तव्य के साथ साथ नागरिकों के कर्तव्यों को भी विहित किया गया है, जिन्हें मौलिक कर्तव्य कहते हैं। अतः देश के उत्थान एवं विनाश के लिए नागरिकों को कभी अपने कर्तव्यों का पालन का समुचित योगदान आवश्यक है। अतः ये सत्य है कि संविधान जनता द्वारा जनता के सामूहिक कल्याण के लिए ही निर्मित होती है। प्रारंभ में मूल कर्तव्य संविधान में प्रावधानित नहीं थे। संविधान में कुल कर्तव्य प्रेरणा सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। 42वें संशोधन में 1976 द्वारा इन्हें अनुच्छेद 51 के रूप में जोड़ा गया। 29 मई 1978 को संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा पर देने के लिए सरदार सरवण सिंह समिति गठित की गई थी, जिसने अपनी समिति में 8 मौलिक कर्तव्य का सुझाव दिया। संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जबकि बच्चों की शिक्षा से संबंधित मूल कर्तव्यों में 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा 2002 में जोड़ा गया। अतः अब कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। यद्यपि संविधान में मूल कर्तव्यों की पालना नहीं किए जाने की स्थिति में किसी भी प्रकार का दंड प्रावधान नहीं है, लेकिन यदि किसी मूल कर्तव्य को लागू करने के लिए कानून बनाया जाता है, उससे मूल अधिकारों पर एक निर्बंधन लग सकता है और फिर न्यायालय के किसी भी ऐसे व्यक्ति को मूल अधिकार को प्राप्त करने से मना नहीं कर सकता है जिसने किसी भी एक या एक से अधिक मूल कर्तव्यों का पालन नहीं किया हो। अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। और उसका दूसरा मूल कर्तव्य है संविधान स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, वो उनका पालन करे। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करे और उसके अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथा है देश की रक्षा करे, आहार के लिए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हो। उन सभी प्रथाओं को त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। और छठवां है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परीक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा का संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे एवं हिंसा से दूर रखे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों को सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे, जिससे राष्ट्रीय प्रगति करते हुए प्रयत्न
का अवसर प्रदान करे। 86वें संशोधन 2002 द्वारा ये जोड़ा गया है। अधिकारों की तरह न ये नागरिकों की बाध्यकारी, किंतु राज्य ने प्रत्यक्ष रूप से मौलिक कर्तव्यों को बाध्यकारी नहीं बनाया गया, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की विभिन्न नीतियां एवं कार्यक्रमों में इनका क्रियान्वयन लक्षित होता है। न्यायालय द्वारा अपने कई निर्णयों से इनकी महत्ता पर बल देते हुए नई दिशा भी दी। अखिल भारतीय अनुवाद संस्थान छात्र संघ AIR 2001 में ऐसी 3262 के बाद में उच्चतम न्यायालय के मूल कर्तव्य के मूल अधिकार की भांति महत्वपूर्ण बताया गया और कहा गया कि ये ध्यान देने योग्य बात है कि अनुच्छेद 51 में भी कर्तव्य के पहले मूलभूत शब्द का प्रयोग करके उन्हें उसी तरह का महत्व दिया है जैसे कि भाग 3 के अधिकारों में दिया गया था। भारत के नागरिकों का कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक मानव दृष्टिकोण को विकसित करें। प्रत्यक्ष रूप से राज्य में कोई मूल कर्तव्य को आरोपित नहीं करता है, लेकिन ये तथ्य स्पष्ट है कि भारत के सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य राज्य का सामूहिक कर्तव्य है। थैंक यू सर। थैंक यू पूजा, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने एक सर्वेक्षण हिंदी में प्रस्तुत किया। जैसा कि पूजा ने शेयर किया कि सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये बताई कि अगर हम किसी मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई कानूनन बाध्य करेगा। ये कुछ हद तक बात सही है, लेकिन जब हम मौलिक अधिकारों की बात करने लगते हैं, मौलिक अधिकार हमारे मौलिक हैं हमारे जीवन के लिए, तो जब कोई ऐसी बात आती है कि आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और न्यायालय सरकार का दायित्व है कि वो उसको इंश्योर करे कि आपके मौलिक अधिकार एकदम सलामत रहें, और कोई अगर मामला आता है जहां ये पाया जाता है कि आप मौलिक कर्तव्य के पालन में विफल रहे हैं, तो ये एक मसला बनता है जिसपे हो सकता है कि आपको किसी मौलिक अधिकार से वंचित किया जाए। इस अधिकार पे ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप मौलिक कर्तव्य का वायलेशन किए या उसका पालन करने में फेल कर गए, इसलिए आपको किसी मौलिक अधिकार से वंचित किया जाए। और इसी तरह नागरिकता के बारे में भी जब विचार किया जाता है कि आपको नागरिकता दी जाए या नहीं दी जाए, या आपकी नागरिकता अक्षुण्ण रखी जाए, तो वहाँ भी एक विचार आता है और इस पर जरूर एक मंथन होता है। अगर आप मौलिक कर्तव्यों को नहीं कर पाए हैं तो वो एक आपके पक्ष में नेगेटिव बात हो जाती है। तो पूजा ने इसको बहुत अच्छे ढंग से हमारे समक्ष रखा। पूजा बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मौलिक कर्तव्य है 51A का B पार्ट। उस पे अपनी बात रखने के लिए मैं आकांक्षा तिवारी को स्वागत करता हूं। आकांक्षा, अपनी बात हमारे बीच में रखें, अपना माइक अनम्यूट कर लें। Good afternoon, everyone. The 51A-B of the पहले अपने को fundamental. इंट्रोड्यूस कर दो। My name is Akanksha Tiwari. I'm from Computer Science Department. It shall be the duty of every citizen of India to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. The framers of the Indian Constitution were visionaries and had practiced values in life, discharging their societal and national obligations based on noble ideals. These ideals had inspired the freedom struggle and the need to defend the country, to promote harmony, secularism, and preserve India's rich heritage that was a composite Indian culture. These values were nurtured at home through tradition and were supplemented by education and were integral to the way of life in India, which is perhaps why the founding fathers of our nation did not deem it necessary to state the fundamental duties. The fundamental duties were laid out much later, perhaps because it had become apparent that society needed a reminder of the fact that with freedom comes responsibility, that if we become a nation of people that are not guided by principles, it would become impossible to uphold the spirit of the Constitution and our fundamental rights.
The Indian Constitution encompasses the noble ideals of democracy, justice, liberty, equality, and fraternity, etc. Let's for a minute imagine we lived in a utopian society, a country that loved and cares for its entire people, where health, education, employment, housing were equally accessible to all. A society that had no division of class, caste, or religion, where our natural, cultural, architectural, artistic heritage was revered and protected. A country where everyone did their work because they felt responsible for not just their own but future. That this sense of responsibility was not driven by a concept that money or material growth would ensure a better future, but a responsibility that was driven by protecting value systems. During the freedom movement, the people in India had the following ideals. All the people were ready to sacrifice everything for the freedom of the country. People donated all the money that they had, left government jobs, went to jails, etc. They had no regional feelings. The only thought all of them had was that they were all Indians and fighting a common enemy, Britain. The integration between different regions in terms of food, language, etc. in those days were even lesser than today, but they had the highest respect for the fellow Indians, irrespective of which region they belonged to and which language they spoke. Selfishness was at its lowest. People considered the entire society as a family rather than looking at their own kith and kins. Thank you. Thank you, Akanksha, for taking us to another step regarding the second fundamental duty. That is, it shall be the duty of every citizen of India to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. If we look at the history of our freedom movement, we can easily see that the participants of the freedom movement were inspired by Indian cultural ideas. They were deeply rooted, and in which we find sacrifice as the top ideals, if you see, or penance is the top ideals, तपस्या और बलिदान. और हमारे आजादी के जितने परवाने थे वो सब इन आइडियल से प्रेरित थे, और सब ने अपने जीवन को एकदम हथेली पे रख के इस मोमेंट में भाग लिया. और क्यों इस मोमेंट में भाग लिया? बाल गंगाधर तिलक ये बात अपनी एक बहुत ही सूत्र वाक्य में कहते हैं कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. जन्म सिद्ध अधिकार है मतलब हम पैदा होते हैं एक आजाद व्यक्ति की तरह. तो इस दुनिया में किसी का हक नहीं है कि हमको कैद करके रखे, हमको गुलाम बना के रखे, या हमारे ऊपर कोई ऐसा शासन हो जो हमारा अपने देश का ना हो, स्वदेशी ना हो. तो उन सारी आइडियल्स को अगर आप देखिए, जैसे आकांक्षा ने बताया कि प्रियम्बल पढ़ते समय आप वो सारी आइडियल्स दिख जाएंगे कि वो कौन से आइडियल्स थे जिस पे आज़ादी के जो दीवाने थे उन लोगों ने काम किया और उन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया. तो राजनीतिक आज़ादी तो हमको मिल गई, वो फ्रीडम तो हमको मिल गई, और इसके बाद जो हमको आज़ादी है, हमारी सामाजिक और आर्थिक उन्नति, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, हमारे समाज का सर्वांगीण विकास, इस पर हम अनवरत रूप से काम कर रहे हैं. तो ये जो दूसरा आइडियल है, चेरिश एंड फॉलो, ये दोनों एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. चेरिश मतलब आप उसको हाई रिगार्ड में देखें, आप उसको आनंद से स्वीकार करें, क्योंकि वो नैसर्गिक है, वो नेचुरल है. हम सारे लोग चाहते हैं आजाद रहने, तो उसको हम अपने को समझें उसको, पहले वो कौन से आइडियल्स हैं उसको ठीक से पढ़ें, समझें और देखें कि देश हमारा किस दिशा में जाने के लिए अपने आइडियल्स को इस्तेमाल कर रहा है, और उसको फॉलो करें. सिर्फ समझने की बात नहीं है, जानना एक चीज है, मानना एक चीज है. जानना, मानना और उस पर आचरण करना, ये जब तक तीनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं, आप उसको जानें और उसको मानें,
जानना और मानना ही चेरिश करना है, और फॉलो करने का मतलब आचरण में लाएं। तो जब हम उसको समझें और उसको अपने आचरण में लाएं और देश के लिए हम अपने को किसी भी स्थिति में देने के लिए तैयार रहें, देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। तो धन्यवाद आकांक्षा। अब हम जो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन इसी जिस पर आकांक्षा ने बात की है, इसी को थोड़ा सा और विस्तार से समझने के लिए, थोड़ा सा और परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं ईशानी लाल को, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल कटरा की स्टूडेंट हैं 11वीं की। तो ईशानी, आप अपनी बात को हमारे बीच में रखें। स्वागत है। माइक को अनम्यूट कर लो पहले। Good morning. My name is Ishani. I would be expanding upon the Article 51A Part B of the Indian Constitution about the fundamental duties. Part 5th A, Fundamental Duties, containing only one article, 51A, has been inserted by the Constitution in its 42nd Amendment Act 1976, with it being brought into effect from 1977. Article 51A B in the Indian Constitution states that it shall be the duty of every citizen in India to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. India's freedom struggle is unique when compared to other freedom struggles across the world. This uniqueness lies in the ideals to which we held steady while pursuing the goal of achieving freedom. Freedom was to be achieved employing fair and honest means rather than through treachery and deceit. Non-violent self-sacrifice for the betterment of the nation, respect for our foes, self-purification by constantly placing community interest over self-interest were some of the worthy ideals followed by the fighters during our freedom struggle. Their endeavor was to achieve independence from colonial rule by following the path of non-violence and truth. The battle of freedom was a long one, where thousands of people sacrificed their lives for our freedom. It becomes our duty to remember the sacrifices made by our forefathers for the cause of the country. But what is much more important is to remember, imbibe, and follow the ideals which pervaded our unique struggle. It was a struggle for social and economic liberation of the people all over the world. Its ideals were those of building a just society and a united nation of freedom, equality, nonviolence, brotherhood, and peace. If we, the citizens of India, remain conscious of and committed to these ideals, we will be able to rise above the various differences amongst ourselves and will be able to work better as a nation. Dr. B.R. Ambedkar, in his closing remarks, said in the Constituent Assembly, "Will history repeat itself? It is this thought which fills me with anxiety. Will Indians place the country above their beliefs, or will they place themselves above the country? I do not know. But this is certain that if the people place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever. This eventuality we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood." The implementation of this fundamental duty requires aspiration of the citizens rather than the enforcement of the law or a sanction. Our freedom ideals laid stress on the purity of the methods which had to be pursued for attaining our goal of independence. Let us not forget that this teaching has eternal values and was not intended only for the period of stress and struggle, but has as much authority and value today as it ever had before. There is such hope that all those who may work for this constitution in future will remember that it was a unique victory which we achieved by a method taught to us by the ones who fought nobly before us. Following these ideals, and it is up to us to preserve and protect the independence that we have won to make it really bear fruit. Let us pledge ourselves to follow the duty of respecting the fundamental principles, ideals, and idols of our freedom struggle. Thank you. थैंक यू ईशानी, बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी बात हमारे बीच में रखने के लिए।
दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण इससे हम निकाल सकते हैं। विश्व में एक स्थान रखता है और विश्व की शांति और समृद्धि के लिए प्रयास करना भारत की एक तरह से फितरत है, कह लीजिए। महर्षि अरविंद, उन्होंने भारत के इस भूमिका को बहुत ही दृढ़ता से स्थापित किया कि दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए भारत एक ऐसा देश है जो सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से लगा हुआ है। भारत किसी देश के विरुद्ध कभी नहीं सोचता है। भारत किसी देश पर आक्रमण करने की कभी नहीं सोचता है। भारत किसी देश के नागरिक को किसी हद तक मदद करने के लिए आगे आने को तैयार रहता है। त्याग और बलिदान हमारी खून में है। विश्व के सुख और समृद्धि के लिए भारत की जो भूमिका है वो शायद किसी और देश की नहीं हो सकती है। ये चीज महर्षि अरविंद ने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से हमारे बीच में रखी। और दूसरी, जो हम अपने देश के बारे में, हम दूसरे की मदद कब कर पाएंगे जब हम खुद एक अच्छी स्थिति में हों, खुद सुखी हों, खुद समृद्ध हों। अगर हमारे देश के नागरिक ही दुखी हैं, नागरिक ही समृद्ध नहीं है, तो हम दूसरे देश के बारे में कैसे सोच सकते हैं। जैसे कोरोना की महामारी में जब टीका की बात आई तो भारत में वैक्सीनेशन का बहुत ही बड़ा मूवमेंट, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को करना था, तो भारत को एक बहुत ही दुखपूर्ण निर्णय लेना पड़ा कि हम अपने लोगों को पहले सिक्योर करें, अपने लोगों को वैक्सीनेट करें। और इसकी वजह से हमें कुछ देशों को उनकी मदद में कटौती करनी पड़ी। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब हम खुद ठीक रहेंगे तभी हम दूसरे को मदद कर पाएंगे। अगर हम खुद ठीक नहीं है तो दूसरे को मदद करने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। तो ये मौलिक कर्तव्यों का जो दूसरा आइडियल है, ये भी हमें सिखाता है कि हम खुद को सिक्योर करें और फिर दूसरों को भी मदद करें और उनको किसी हद तक सुरक्षित रखने का, उनको समृद्ध बनाने का प्रयास करते रहें। तो इस पर हमें जागरूक करने के लिए ईशानी का बहुत बहुत आभार। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा मौलिक कर्तव्य है, तीसरा मौलिक कर्तव्य हमारे समक्ष प्रतीक्षा रखेंगी, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल कटरा की छात्र हैं, 12वीं की छात्र हैं। प्रतीक्षा, अपना माइक ऑन करके अपनी बात हमारे बीच में रखो। Good evening, everyone. My name is Pratiksha Tiwari and I am from DPS Katra, 12th standard. I'll be speaking on the third fundamental duty. That is, it shall be the duty of every citizen of India to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India. Sovereignty can be understood as the authority of a supreme power where no internal groups or the external authority can undermine its supremacy. As a sovereign state, India is free from any kind or form of foreign interference in its domestic affairs. A holder of sovereignty derives authority from some mutual acknowledged source of legitimacy. In India, this mutual source is referred to our Constitution, is the most essential attribute of the state. In the form of its complete self-sufficiency in the frame of a certain territory, that is its supremacy in the domestic policy and independence in the foreign one. Freedom comes with a lot of responsibility. Since our country has decided to favor sovereignty, it has also accepted to take responsibility for its actions, because when we are free, we influence other people around us. Similarly, India influences others and vice versa. And India makes sure the influence is a positive one. India has strong moral principles that shows its integrity, the quality and state of being honest and whole respectively. Having integrity means that you live in accordance to your deepest values that you refuse to compromise on and always keep your word. India's integrity allows it to maintain a respected reputation among other countries and build trust with each other. Since we, the citizens, are all in this together, being one undivided entity, our unity can be seen practically.
Unity makes us respect each other's opinions and also improves the quality of teamwork. Our country is especially famous for its unity and diversity. Since independence, when our constitution was being made and executed, no one actually believed it's gonna work, but here we are in a country as big as India, where a grand synthesis of cultures, religions, and languages of the people belonging to different castes and communities has upheld its unity and cohesiveness despite multiple foreign invasions. Thank you everyone for the attention. Thank you, Pratiksha, for highlighting this very important dimension of sovereignty, unity, and integrity of India as third of the fundamental duties. Yes, as a nation, we must have every control to manage our domestic affairs and also decide how we are going to enter into relationship with other countries, and there should not be any external pressure or force for making such decision. And as you rightly suggested that yes, our country is a vast country with ample amount of diversity at social and cultural level. And with this much diversity comes a great challenge for the unification of India and for integration of the nation. If we look at the unity part, then of course, Sardar Vallabhbhai Patel was the person who was behind a complete unification of all the parts of India in Indian nation. So unity is something which is established, and earlier there was a kind of sign of agreement through instrument of accession, and part 7 of Indian Constitution talked about 4 kinds of a state and how the union is going to have a relationship with those states. But now in the present Constitution of India, part 7 is entirely abolished. So there is absolutely no question regarding different kinds of state or different kinds of territories forming part of Indian territory. So it is completely a united country, a union, and integrity of our country is of utmost importance. With this much diversity, we need to keep care of all the parts, every geographical region, all the people who are populating this region, so that they all cherish the ideals of the Constitution of India and also feel united with the nation. They feel that it is our nation. That feeling is important. And the third fundamental duty suggests that we need to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India. So thank you, Pratiksha, for highlighting this part. Now let us move on to the next, fourth fundamental duty. And in our list, we have Mohit Kumar Chaudhary, who will be guiding us regarding the fourth fundamental duty. So Mohit, please unmute yourself. You are welcome. जी Share सर, your ideas. मैं रात को सो गया और मैंने सपना देखा कि जीवन सुंदर है। मैं उठ गया, सुबह हुई, मुझे पता चला कि जीवन कर्तव्य है। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं मोहित कुमार चौधरी, चतुर्वर्ष का छात्र, आपके सामने चौथे मूल कर्तव्य पे अपने विचार रखना चाहता हूँ। चौथा मूल कर्तव्य कहता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो जब आह्वान किए जाने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में पहला विचार कोई आता है तो वो है अनिवार्य सैनिक शिक्षा की आवश्यकता। सैनिक शिक्षा कई दृष्टियों से उपयोगी है और जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। इससे लोगों में अनुशासन आता है, इससे सेवा, त्याग, बलिदान और निष्ठा जैसे महान गुणों का बढ़ावा मिलता है और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर देश को विदेशी हमलों से बचाने के लिए
प्रशिक्षित सैनिक उपलब्ध हो जाते हैं। अनिवार्य रूप से सार्वजनिक सैनिक प्रशिक्षण पर बहुत बड़ी धनराशि व्यय करनी पड़ेगी। इसकी व्यवस्था भी आसान नहीं होगी और हाल ही में हमारी सरकार ने भी कहा था कि अनिवार्य सैनिक सेवा इस समय आवश्यक नहीं है, लेकिन इससे होने वाले असीमित लाभों को देखते हुए आवश्यक है कि धीरे धीरे करके हम इस व्यवस्था को समूचे देश के लिए लागू कर दें। लेकिन जैसा कि हमारे चौथे मूल कर्तव्य में लिखा है कि देश की रक्षा करें, तो देश की रक्षा सिर्फ सैनिक बनकर ही नहीं हो सकती। हमें याद होगा कि जब 1962 में हमारे देश ने 15 साल हुए थे आजादी को और हमारे देश ने पहला युद्ध लड़ा था, तो उसके बाद हमारे देश की हालत ऐसी थी कि खाने के लिए भोजन नहीं था लोगों के पास, गरीबी छा गई थी देश में। तो हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने घर के बगान में अनाज उपजाकर हरित क्रांति की शुरुआत की। तो ऐसे विचार सभी युवाओं में आना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा सोच सकता है, तो उसके बाद कैसे हम देश की सेवा अलग अलग रूप में कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है जब हम अनुच्छेद चौथे पंक्ति की बात करते हैं कि तो हमें अनुच्छेद 23 सामने आता है, जिसमें लिखा है कि मनुष्य को क्रय विक्रय और बेगार पर रोक लगा दी गई है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। और यहाँ पे ये पंक्ति कहती है कि देश की सेवा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो सवाल उठेगा कि ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, लेकिन साथ साथ अनुच्छेद 23 में यह भी लिखा है कि जब भी आह्वान किया जाएगा सरकार द्वारा, तो उसको उसकी मजदूरी भी मिलेगी और मानदेय भी दिया जाएगा जो वह सरकारी काम करेगा। तो मैं अपनी बात खत्म करने से पहले 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगा। तो जो मौलिक कर्तव्य और अधिकारों को जोड़ती है, जैसे मौलिक कर्तव्य का भी निर्वहन करो, दूसरों के अधिकारों को ना हनन करो, जियो और जीने दो को करो साकार, तभी आपके अधिकार लेंगे आकार। उपकार के पथ पर अधिकार मिलेंगे, कर्तव्य एवं अधिकार संग संग चलेंगे। कर्तव्य की राह पर सस्ते अधिकार, कर्तव्य ही लाते अधिकार में निखार। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मोहित, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने ये बात हमारे बीच में रखी कि देश की सुरक्षा का ये सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है कि हम बंदूक लेके बॉर्डर पे खड़े हों। हमें सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है, आर्थिक सुरक्षा की जरूरत है, हमारी धार्मिक प्रवृत्तियां हैं उनको एक हेल्दी ढंग से हम परस्यू कर पाए, उसकी सुरक्षा की जरूरत है। हमारे सारे लोग सुरक्षित रहें, भौतिक रूप से समृद्ध रहें और आध्यात्मिक रूप से जागरूक रहें। उसके लिए जितने भी प्रयासों की आवश्यकता है वो सब सुरक्षा के दायरे में आते हैं। और आप देखिए, सामान्य ढंग से तो आप अपनी सुरक्षा कर ही रहे हैं, आप अपने को अलग अलग गतिविधियों में एंगेज करते हैं और अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने विकास के लिए प्रयास करते ही हैं। और इस चौथे मौलिक कर्तव्य में ये कहा गया है कि अगर आह्वान किया जाए तो आपको राष्ट्रीय सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। और जैसे मोहित ने कहा कि आप जब राष्ट्रीय सुरक्षा में, राष्ट्रीय सेवा में योगदान देते हैं तो आपकी सुरक्षा, आपके जरूरतों का ख्याल रखना भारत सरकार का दायित्व होता है और उसके लिए भारत सरकार प्रयास करती है। अब जैसे मैं इस संस्थान में अध्यापन का काम कर रहा हूँ, तो मेरी जितनी भी जरूरतें हैं ये संस्थान उसको पूरा कर रहा है, हमको वेतन दे रहा है, हमको रहने के लिए व्यवस्था किया है और जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हमको ये संस्थान दे रहा है। तो ऐसा ही हमारा देश है, जब हम देश की सेवा में लगते हैं तो देश हमारी परवाह करता है और हमको पूरी वो सुविधाएं देता है। तो ये चौथा मौलिक कर्तव्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम जिस भी क्षमता में जहाँ भी हैं
वहाँ पर अपने विकास करें और समाज में आसपास के लोगों को भी विकसित होने के लिए प्रयास करें। तो ये बहुत ही सुंदर बात है और हमको इसको अपने जीवन में उतारना है। हम कर रहे हैं और भी जितना कर सकते हैं, अपने पूरी क्षमता के साथ जितना कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। तो धन्यवाद मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम 5वें मौलिक कर्तव्य के बारे में सीखेंगे और 5वें मौलिक कर्तव्य को हमारे समक्ष रखने के लिए सुमेघा गुप्ता हैं। तो सुमेघा बेटा, अपने को अनम्यूट करके अपनी बात हमारे समक्ष रखो, हम सारे लोग सीखें। Thank you so much, sir. My name is Sumekha Gupta, and I'm studying integrated MBA at Sri Mata Vaishno Devi University. And today I'm going to speak on the part 5 of the fundamental duties. So, in general, like if we describe the fundamental duties, they are the moral obligations. So, it helps citizens to promote a kind of spirit of patriotism, and it promotes the welfare of the country. So, these duties, they kind of represent the guidelines that the citizens should obey for the welfare of a democratic country. So the Constitution of India has imagined that the citizens then abide by this and like kind of discharge certain fundamental duties. They are provided in the chapter 4A, and of this article 51A part E provides for the fundamental duty to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India that transcends religions, linguistic and regional or sectional diversities, and to renounce any practices derogatory to the dignity of the women, and to see that the universal values such as trust, related conduct, peace, love, and non-violence be the foundation of our education. So as we know, given the vast diversity among people, the presence of one flag and single citizenship strengthens the spirit of brotherhood among citizens. It states that people should rise above narrow cultural differences and strive towards excellence in all spheres of collective activity. So, recognizing that the diversity can create dissonance, the Indian Constitution was not only a North Star, but a handbook to achieve and maintain stability. These principles that are laid down in the constitutions were laid with the view that Indians can only lead on the way of welfare state, while each and every section of the society will live with brotherhood and peace and discarding the inequalities. So eradication of social evil has been the prime aim of the Constitution of India. And Article 51A, Part E, makes it incumbent on every citizen to promote harmony and spirit of common brotherhood among all the people of India. Although these duties are non-enforceable and but still they are very important, because for the growth of democratic country like India, it is imperative that all fundamental duties are followed by the citizens while respecting the integrity and promoting cultural harmony in the country. So as a good citizen of the country, there's a need for us to know and learn our rights and the duties that make them as an essential part for the welfare of the society and the country. The government, in order to create strong foundation with strong national character, introduced the fundamental duties. The fundamental duties, they do not just lay emphasis on human dignity, but also create a feeling of harmony in the community. It's in the belief that our society can only be uplifted if each and every citizen focuses on bridging the gaps that had been created in the society by performing their duties towards society. Therefore, I would conclude by saying that fulfilling the fundamental duties is necessary for the prosperity and peace of the society and the entire country. Thank you so much. Thank you, Sumedha. This is a very important fundamental duty, which says that it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, and also to renounce practices which are derogatory to the dignity of women. As it is emphasized time and again that we are a country with ample diversity. We have religious diversity, we have linguistic diversity, we have all sorts of regions which you can imagine anywhere on the planet. So we have enough of regional diversity, and our society is having a peculiar characteristics of having different sections, caste, etc.
So we have diversity, which is, of course, posing challenge and also creating opportunity to have a harmonious life and see this region of the world has been a very cordial region which welcomed people from every part of the globe. Look at the religious diversity. We have Hinduism, we have Buddhism, we have Jainism, which are major religions originated and flourished in this very land. We have Parsis, Christians, and Muslims. These religions have their origin outside of this region, but they are most welcome and they are living in a very healthy way. They are living in a very cordial atmosphere. With little politics here and there, we see Indian society is largely a harmonious society, and wherever we have problems, we are with full energy, we are tackling that, and we are trying to attain greater and greater harmony in the society. And India has been a very deeply culturally respectful towards women. And today we see several problems associated with the miseries of women. And this particular fundamental duty demands that we must refrain from doing anything which is harmful for women, right? Not just women, in fact, with everyone, but this particular fundamental duty reminds us of our extra additional obligation, which is towards especially women. So thank you for reminding us of all these matters. And this fundamental duty is very important. So thank you, Sumega. Thank you, sir. Now, welcome. So on this very part, this very point, we have another presentation by Ayush Srivastav. So आयुष अपने को अनम्यूट करके अपनी बात हमारे समक्ष रखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है. Sir, am I audible? जी जी बिल्कुल, स्वागत है. Good afternoon to everyone. My name is Ayush Srivastav, and I'm a student of I'm a third year student of Computer Science Engineering Department. As Sumega has already described the very importance of this particular duty, and she has described the need of this duty in our country. Now, my take on this duty is rather I would like to pose a sarcastic question on the current political scenario in our country and how it is violating the very principle this duty is based on. So the title of my piece is India Challenging India. On the eve of this Republic Day, President Kovind mentioned the rights and duties as two sides of the same coin. He praised people's adherence to rigorous COVID lockdowns and later large involvement in vaccine drives as completing one's essential duties. Thereby, he broadened the concept of fundamental duties. Absolutely. Article 51A, subclause D, clearly asks for people to render to national service when they are called upon to do so. We Indians are always upfront for performing sacrifices, be it fasting for a day for winning war, standing in long queues for ending corruption, adhering to strict lockdowns, etc. We don't even question the outcomes once they are in nationalist cause. But when it comes to just next subclause, that is E, the picture is little shadow. I want to talk about this duty, which asks every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, going beyond religious, linguistic, and regional or sectional diversity, and also to renounce the practices which are derogatory to the dignity of women. This duty should be mirrored throughout our all Indian institutions, as India is known for its mind-boggling diversity and very rich traditional values. Surprisingly, among all fundamental duties, none talks about having political awareness and carefully making political decisions. No corner of India's economy and society can be left influenced by its politics. Since politics mandates people, what people want and people accept is supreme. Our leaders are then just mere reflections.
This duty asks us to go all beyond the religion, language, caste, and region and protect the dignity of women. The latter one, that is protecting the dignity of women, and need to mention it as a fundamental duty in a country which idealizes Lord Ram, reflects a different situation of Indian women in the minds of our constitution makers. India's most successful political campaigns in the past few years are primarily focused on three aspects: religion, caste, and regionalism. Ongoing UP assembly elections are the best example of heavy caste politics. Regionalism dominates in Bengal and Maharashtra up to an extent where tracing citizens from specific states of India is permissible. And king of all, religion rules the center. Why are the prime beliefs which are most fundamental to our constitution are challenged openly in the political wars of our country? No politician is likely to directly ask voters to vote for a specific caste or religion. Still, somehow, the majority of voters are aware of the hidden agendas and follow them. The Women's Reservation Bill 108th Amendment has been introduced in the National Parliament to reserve 33% of Lok Sabha and Vidhan Sabha seats for women, but hasn't been passed yet. Those states like Andhra, Bihar, Kerala, etc. have increased reservations in local government from 33% mandated by the law to even 50%. We are indeed a patriotic society aspiring to take our nation and its people to its best. Politics is meant to be taken more seriously than just seeking our caste or religious identity in our leaders, and also then constantly scrutinizing our elected leaders' policies with diligence. Charles W. Pickering said, "A healthy democracy requires a decent society. It requires that we are honorable, generous, tolerant, and respectful. Are we being those? Is India challenging India to change to a society and polity which actually follows its fundamental duties and principles?" Thanks to all. Thank you, Ayush. Very nicely, you have reiterated and emphasized certain dimensions on the diversity, especially regarding the practices which are derogatory to the dignity of women. So we must be aware of the problems, and we ourselves should not engage in any kind of harmful activities towards women. And also, we must promote all those who are surrounding us, who are close to us, to do the same. And as you have rightly mentioned, that we are a diverse country, and therefore it is the responsibility of each of us to do everything possible to maintain harmony in the society, in the nation. So thank you, Ayush, for taking us to this journey. Now we are moving towards the next fundamental duty, which is 51AF, and we have Wazahat Jahur Khan, who will guide us regarding this particular fundamental duty. So Wazahat, okay, मुझे लगता है कुछ उनके साथ नेटवर्क इश्यू होगा या कुछ भी, हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं उनको। ज्वाइन तो है वजाहत, चलो बीच में जब आएंगे तो हम उनको सुन लेंगे। तो मैं बस कंटिन्यूएशन के लिए, तो अगला जो मौलिक कर्तव्य है, अभी वजाहत हमसे नहीं जुड़े हैं, ये था कि it shall be the duty of every citizen of India to value and preserve the rich heritage of our composite culture. You have seen in the previous fundamental duty where we talked about the need of harmony and its promotion for the nation. So cultural diversity is one of the unique features of our nation. And there are symbols which represent our culture. So we have different social signposts, and also since Indian society is deeply religious society, so there are religious signposts. And we have seen a long history, and therefore there are historical signposts. So looking into the philosophy, culture, history of India, we see there are different markers
which represent what we call Indian ethos, Indian value. And this particular fundamental duty emphasizes that we need to value and preserve the rich heritage of our composite culture. So we have seen a long history. Indian society is not a society which started in a particular time and we know that yes, from this year it has started. Look at the tradition. We have the most ancient literature which is found in India. We have the most ancient religious practices which are prevalent in every part of India. We have every nice things which humanity could think of anywhere on the planet. We find its origin in India. So that is something which is which is a very pride and fortunate situation. So with this much richness, what is our responsibility is to be familiar with that. Valuing and preserving involves, first of all, familiarity of our rich cultural heritage, the diversity, our familiarity with the diversity of our cultural heritage. So how to value it? First, we need to be familiar and see the relevance, see the antiquity. For how many thousands of years these values have been preserved. So there must be something deeply significant about these values. Otherwise, इतने समय तक तो नहीं चल सकता। कहते नहीं कि बहुत सारी सभ्यताएं मिट गईं। भारतीय सभ्यता पुरानी सभ्यताओं में एक, और वो इतने साल से चल रही है, इतने पुराने समय से चल रही है। तो कुछ तो है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है। तो वो बात क्या है ये तो जाने हम पहले, तो उससे हम फेमिलियर हों, उसके पीछे जो दर्शन है, उसके पीछे जो संस्कृति की चेतना है, उसको जाने और उसको आगे बढ़ाने में, उसको समझने में और आगे लोगों को समझाने में, इसको और प्रचार करने में अपना योगदान दें। तो ये जो पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमें इस दिशा में सोचने, इस दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देता है कि ये जो हमारी सांस्कृतिक विविधता है, ये हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य है, हम इसको प्रिजर्व करें, समझें और उसको आगे बढ़ाएं, अपने जीवन में उतारें। So this is essentially about this particular fundamental duty, that it shall be the duty of every citizen of India to value and preserve the rich heritage of our composite culture. So with this brief observation on this particular fundamental duty, we will move on to the next fundamental duty, that is 51A-G. And in between, if Wajahat comes, we will hear him. So we are moving now to the next fundamental duty, and we will hear from Bhumika Singh about this duty, 51A-G. Bhumika, beta. Good afternoon, everyone. My name is Bhumika Singh, and I'm first year student from School of Business. So my topic of fundamental duties, that it shall be the duty of every Indian citizen to protect and improve the natural environment. Fundamental duties of Indian citizens are mentioned in 51A under Part 4A of the Indian Constitution. There are 11 fundamental duties mentioned. One of them is to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. The fundamental duties are moral obligations of all Indian citizens. There is also a National Committee on Environment Planning and Coordination that is formed by the Government of India. The environment starts from deep inside the earth, from the roots of different trees, and extends as high as the air we breathe travels. Water resources, air, trees, and earth are the constituents of the environment. The health of all these constituents of this environment will have a say on the health of total environment. Greenhouse gases, air,
and water pollution, deforestation, etc. are some of the main issues that are causing problems to the environment. We human beings are responsible for all these problems. Technological developments, manufacturing industries, and the ambition of human beings to have a luxurious life are the main reasons of these problems. So we are responsible for these problems. It is our collective duty to see that the integrity of the environment is maintained. But when we talk about this, everybody says that I am a single person. How can I affect a change? But it should be remembered that a collection of droplets can make a river. We are only spoiling the environment, so we all should unite and see that the problem is fixed and environment is protected. Every individual will have a role to play, and let us introspect ourselves whether we are playing our role properly or not. So what can we do to improve and to save the natural environment is we should recycle, reuse, and composting are the basic principles one can adopt. If we recycle certain items, we can reduce the waste that is being generated. For example, by reprocessing the used plastic, we can reduce the generation of waste. Another big threat to the environment is greenhouse gases. These gases are mainly coming from the vehicles that are being used by all of us for transportation. So we should keep this factor in our mind when we plan our travel and transportation. If you use a cycle, if you can use a cycle, use it instead of a bike. Stop using a car if a bike can do. Try to use public transportation instead of personal vehicles. It is better to pull up instead of using individual cars to commute to and from the office. Minimizing the usage of air conditioner will help environment. Another way to help the environment is to conserve energy. Minimize the energy consumption by switching off power consuming appliances and using them when there is a necessity only. Not throwing the waste which traveling on the roads is very good for the environment, and many more. So I'm going to conclude by saying that the environment is providing us with many items that are essential for our living. We have seen how costly is oxygen during the pandemic times, which we get always free of cost from environment. There is no life if the environment is spoiled. So it is correct on the part of the government to include the duty of environmental protection in fundamental duties. Let us amend our lives by affecting small changes in our lifestyle, which will help in a big way to the environment. Let us not forget our fundamental duties as responsible citizens. That's all from my side. Thank you. Thank you, Bhumika. Yes, it is one of the greatest concerns today we are facing, and Corona being one of the drastic effect of our environmental degradation and a kind of careless behavior which we see. So it is the duty which is put as the 7th fundamental duty. And remember, all these duties are fundamental. That means they are basic to our existence. They are basic to our decent life on this planet. That is why they are called fundamental. That means you cannot just live a good life and decent life if you just go on violating these duties. They are fundamental for our existence and decent life. So we are living in this environment, and therefore we have to take care. So for doing anything, every day we need to, individually we need to see whether we can improve on the situation, what we are doing. आप मार्केट जा रहे हो, थैला लेके जाओ, ट्रेवल कर रहे हो, आप देखो कि जहां पॉसिबल है हम ट्रेवल ऐसे फ्यूल बेस्ड इंजन्स को इस्तेमाल नहीं करें. अब अगर 400-500 मीटर के अंदर आपको ट्रेवल करना है, जाना है, तो आप आराम से जाइए, पैदल चलते हुए जाइए, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है. थोड़ी दूर जाना है तो आप बिल्कुल पैदल चलिए. तो छोटे छोटे एफर्ट जो हम सब लोगों को करने हैं, वो एफर्ट हमें
लेने हैं, हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी है, हमें प्लांटेशन करना है, हमारे आसपास जो रिवर बॉडीज हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, उनका ध्यान देना है, उसमें गंदगी ना फेंकें, उनको ठीक से रखें, हमारे आसपास जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रिजर्व करें। और सिर्फ लिविंग बीइंग के लिए नहीं, बीइंग एज सच के लिए हमारे अंदर एक कंपैशन होना चाहिए। हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अपने आवश्यकता से अधिक उसको इस्तेमाल ना करें, संग्रह ना करें। और ये सारी चीजें जब हम कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए। कर सकते हैं और कर नहीं रहे हैं तो कर सकते हैं, इस पे कोई भी डाउट कर सकता है। तो ये 7वीं जो मौलिक कर्तव्य है, ये हमें इसी बारे में कह रहा है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। इसमें लिंग भेद नहीं, इसमें एज का भेद नहीं, इसमें रीजन का भेद नहीं, एवरी सिटीजन। It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. So, thank you, Bhumika, for making this point very clearly. So, let us go to the next 8th fundamental duty, 8वीं fundamental duty. And to guide us in this regard, we have Sweetie Pandey, who is from Amity. She is doing BSc Honors. So, Sweetie, you are most welcome, and please share your thought with our colleagues and students. Sweetie? Yes, sir. Thank you, sir. So, Welcome. good afternoon, one and all present here. I'm Sweetie Pandey. I'm pursuing my graduation from MIT University. It brings me immense pleasure to share my thoughts and spread the word about fundamental duties that we are abide to follow as Indians. And the fundamental duty I chose to speak about in this meeting is in 42nd Amendment in 1976, Article 50A(h), and it states that to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. The term scientific temper was first coined by India's first Prime Minister, Mr. Jawaharlal Nehru, in his book, The Discovery of India. This term refers to a modest, open-minded temper which welcomes new ideas, knowledge, and opinions to broaden the information about any domain and to understand different school of thoughts. You will be glad to know that India is the first and only country to explicitly adopt scientific temper in its constitution in this domain. So discussion, analysis, and even arguments are vital for developing and inculcating a scientific temper for the dedication and commitment of scientific community to strive towards excellence so that the nation constantly rises to a higher level and achievements. It is one of the most important fundamental duty as we are living in a growing country, in a developing country. So let us look at the facts and stats currently that's going in the country. India's nuclear energy program, being in a technical denial regime, it has been Atmanirbhar since its inception. It has been a bold step taken by government under the leadership of our current minister during year 2017 by approving construction of indigenous pressurized water reactors with total installed capacity of 7,000 megawatt. So India is one of the very few selected nations in the world. Therefore, we understand the development of scientific temper is one of the duties of scientists and technologists to be able to contribute to the nation building through scientific discoveries and technologies, development and deployment. And there should be continuous effort by the government as well. Scientific and academic institutions, industry units, and each and every organization to inculcate awareness in the citizenship of India about the fundamental duties. Now let us take a few informations about what governmental actions has been taken place. Very first major program under Government of India to popularize scientific temper among the people was Vigyan Mandir, that stands for Temple of Knowledge or Science. This experiment was placed in 1953 and it was created by S.S. Bhatnagar at CSIR.
Its purpose was to disseminate scientific information of interest to rural population. And in 1982, the National Council for Science and Technology Communication, that stands for NCSTC, it was established under the Department of Science and Technology. NCSTC is mandated to communicate science and technology to masses, stimulate scientific and technological tempo, and coordinate and orchestra such efforts throughout the country. NCSTC organizes annual programs such as our National Science Day, National Mathematics Day, the National Children's Science Congress, National Teachers Science Congress, and Science Expresses. It is specifically dedicated the National Science Day on 28 Feb 2014 to the theme Fostering Scientific Temper to Spread Nehru's Vision. At last, I would like to give this speech a full stop with a sentence that Nehruji quoted in his book, and it says, "It is the science alone that can solve the problems of hunger and poverty, of insanitation and illiteracy, of superstition and deadening custom, of vast resources running to waste, of a rich country inhabited by starving people." Thank you so much. Thank you, Sweetie. Thank you for highlighting this very important dimension in the list of fundamental duties, that we need to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. So since we all are part of higher education, we can feel it with more sincerity that what it means to say that we need to develop scientific temper. That means we need to be rational. We need to have good reason for doing anything, and that not be based on blind faith or any kind of dogmatic thinking. It must be based on our proper understanding of the relationship among ourselves and also between us and the nature. So to have scientific temper means to have that kind of rationality to understand the relationship of every kind in proper context. And then we need to develop humanism. Why it is essential? Because human beings can do something which could be suicidal. Human beings can do something which could be harmful, not for human being, but also for other creatures on the planet. Not only just other creatures, but the whole planet. Human can do such drastic thing. For example, we have stored enough of atomic weapons to destroy this planet several times, not just one time. And therefore, it is our responsibility to have human concern. Humanism is related to human concern and thinking of well-being in this very worldly life, not to destroy this worldly life in aspiration of something which is otherworldly, right? So humanism is that dimension which highlights that we need to prosper, we need to live a happy, good life on this very planet, not to be in hurry to go to any other planet or other world. So we have to make this very world a good place of living. And also we need to inculcate the spirit of inquiry and also progress, improve on wherever we are. जितना भी हमारी समझ है, जितना भी हम कर पा रहे हैं, उसमें हम आगे बढ़ने की कोशिश करें. हमारे स्पीच में, हमारे बिहेवियर में, हमारे थिंकिंग में रिफॉर्म की जरूरत है. हम कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है. So we need to continuously progress in our understanding, in our behavior. So improvement is required. So we need to have this kind of inquisitiveness and also progress on our understanding. So thank you, Sweetie, for highlighting this part. So this was the 8th number fundamental duty. Now we are moving to the fundamental duty number 9. And to enlighten us on that part, we have Shaili Pandey, who will take us to this particular fundamental duty, the 9th duty. So Shaili, you please unmute your mic and share your thoughts. Good afternoon, everyone. I'm Shaili Pandey from Department of Electronics and Communication. Thank you for giving me this opportunity to present myself on one of the fundamental duty.
I will be speaking on the 9th fundamental duty, which is, it shall be the duty of every citizen of India to safeguard public property and to absorb violence. We know that in democracy, people have a right to disagree. Spirit of democracy should be unity in diversity and also of opinion. Protests are a channel to manifest this diversity of opinion. However, instances of violence and vandalism remain to be a concern. We have the largest youth population in the world, but also limited resources. The public property that is destroyed during protests are the resources for our collective enjoyment. It should not just be for the law enforcement agencies, but also upon us to absorb violence. Some research have revealed that several crores are lost due to destruction of public property every year. Citizens surely have a fundamental duty under Part 4A to absorb violence, but at the same, there should also be a scientific temper that helps us understand this double standard. Often political parties, politically affiliated persons, student wings of parties, and extremists are the people who start the violence and almost never get caught. We must identify such people who make protest a breeding ground for their toxic objectives. We must effectively enforce the law in an equal manner for everyone. It is our duty to prevent leveling of those people who ask questions. Children must be taught the importance of brotherhood and peace. Value education must not be merely be a subject, but something that is imbibed into hearts of people. We must nurture nationalism, but make people capable of differentiate the same from pseudo-nationalism. We must learn to identify and distance ourselves from fringe elements and safeguard the culture of peaceful protest by absorbing violence. Anyone who calls violence is a rogue element and should not be treated as a protester. Real protesters are those thousands and lakhs of people who have time and again remain peaceful even after facing the brutality of the police and the system. While the top-down attempts to trivialize the idea of protesting remains be a colossal problem for our democracy, the specific incidences of violence and vandalism cannot be ignored too. Presence of violence does a three-pronged damage to the cause. Firstly, it delegitimizes the protest. Secondly, it causes a toll on the exchequer due to the destruction of public property. And thirdly, it takes away the right of enjoyment of the property which was meant for conjoint use. Presence of violence delegitimizes even a genuine valid protest. Same were the reason for Gandhiji calling off the movement after the violent Chora-Chori incident. Cutting short to India 2022, here too, demanding your rights from democratically elected governments, asserting them and standing up against what is seemingly wrong is not just a mere right or a liberty, but rather a duty of every aware and conscience-driven individual. Must it not be forgotten that it was standing up against the oppression by the power, which made an English-speaking London-written barrister popular as Bapu among crores of Indian masses. To clear the air around legality of protest, even the topmost bastion for justice, the Supreme Court held in the Ram Leela Maidan case that citizens have a fundamental right of peaceful protest, like Voltaire had said. I may disagree with what you say, but I shall defend till my death your right to say it. Thank you, everyone. Thank you, Shaili, for making another contribution to this discussion. And that is 9th fundamental duty. And here we see that it is the duty of every citizen of India to safeguard public property. Now, if you look at the history, when we had monarchy, so monarchs used to build up their palaces and they build up forts, etc. And they thought that it is their primary duty to safeguard that premise. And secondarily, only they thought of providing any facility to the public. Today, you see, we have adopted the parliamentary system of democracy, and here the Indian state is a welfare state. That means the state takes every possible effort to ensure the ease of life for every person, every citizen on this part of the globe. And for that, enough of public properties are created, the government being the greatest owner of that property, and the people of our nation are the enjoyer of those properties. And therefore, it is our responsibility to safeguard the public property. Something which is meant for common use must be left as good for others. We all are looking for good facilities, good roads, good vehicles, good
products, etc., for our enjoyment. And if we just focus on only our self-interest, then certainly it is going to not help us. So we need to protect public property in all our small efforts. Suppose we are using public toilets. So we need to leave that toilet as good for others as we are expecting for ourselves. And if there is any issue, we try to correct it. And at least we should not be a nonsense creator for public property. So individually, we have to take initiative. We are traveling in trains, planes, buses, and we are using so many modes of transport, right? So we need to properly board and handle them so that when we are leaving that place, nobody has found that thing littered, etc. So wherever we are, we need to take that proper care. Since we are living in democracy, then certainly we have right to disagree, but that disagreement must be expressed in a civilized, decent way. We should not engage in violent activities, damaging public property or killing someone or doing some nonsense. So this particular fundamental duty reminds us of our responsibility towards maintenance and creation of public property, and also having a decent behavior, non-violent behavior. The Gandhian principle reminds us of all that thing. Jainism is one of the greatest traditions highlighting non-violence as the highest virtue. So it is our responsibility to be familiar and also adopt them in our behavior. Now, let us move on to the next fundamental duty, that is the 10th fundamental duty. And to guide us in this part, we have Harsh Kumar, who will talk about the 10th fundamental duty. So Harsh, please unmute your mic. Good morning, sir. Am I audible? Yes, please go ahead. Sir, first of all, I would like to seek forgiveness from you because I wanted to do this thing by keeping on my camera, but my laptop reached me at the last moment. Sir, coming to me, I am Harsh Kumar. I am currently pursuing my BTech degree in Electronics and Communication Engineering, and I am in my 4th year. So, sir, coming to my topic, first things first, I'm very grateful for this opportunity provided by you, so that I'm able to speak among such intellectuals and educated people in such a decorated seminar. So the topic given to me, or rather I'd say I have chosen, is to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement. So secondly, what I would say is I would like to elaborate my topic in layman language by using both Hindi and English, so that the people present over here can connect with me and my understanding in a better way. So the first thing I would like to discuss is, what is excellence? Excellence kya hai? Is it a parameter to judge how educated a person is or how educated the people of a country is? I guess no. Sir, excellence is giving your 100% towards whatever domain in which you are working. And also, in my opinion, excellence is not defined in any single individual domain. It also counts for broadening your knowledge and experience in every possible aspects. So the second topic I would like to discuss upon is why people of a country should contribute their part for the excellence of that country. ये लोगों को क्यों participate करना चाहिए लोगों उस देश के achievement में. So sir, as many of us have studied fundamental rights, social rights, or human rights, there is a major term, two terms called state or subject, which we come across many of times. What subject is? Subject stands for a country, and states are the people decide. State stands for a country, and subjects are the people residing in that country. सर हम सब जानते हैं कि स्टेट हमें रहने के लिए जगह देती है और हमें राइट्स देती है ताकि हम पीसफुली उस कंट्री में रह सके. तो सर इसके एवज में वो ये भी चाहती है कि जो लोग उस कंट्री में रह रहे हैं वो स्टेट की तरफ अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करें.
So now it becomes our fundamental duty that we should perform our duty in a great way so that our country get a high level of achievement and excellence. So the second thing I would like to discuss upon is, as we can see in the fundamental duty, the two terms individual excellence and collective excellence. Individual excellence is getting excellence on an individual level, and collective excellence is pushing people nearby you and taking alongside them for a level of excellence. But in my opinion, individual excellence and collective excellence are interconnected. Why I am saying this? मैं एक एग्जांपल के साथ इसको बताना चाहूंगा. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और इस पे सोने पे सुहागा हुआ जब विगत वर्ष ओलंपिक्स में हमारे एथलीट नीरज चोपड़ा ने भारत देश के लिए गोल्ड मेडल जीता. तो सर ये इंडिविजुअल एक्सीलेंस है नीरज चोपड़ा के लिए और इस देश के लिए अचीवमेंट है, बट फॉर मी इट आल्सो इज अ कलेक्टिव एक्सीलेंस, बिकॉज जो कि हमें सर आने वाले दिनों में दिखेगा, क्योंकि ही हैज इंस्पायर्ड million and billion of people and led residing this country to push beyond the level of excellence and bring gold for this country. Now pondering upon all these topics, if we discuss about the truth and fallacy of the fundamental duty, कि क्या इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्सीलेंस से एक देश का अचीवमेंट होता है, तो सर इट इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज ऑन एन एवरेज इफ इन अ कंट्री देयर आर हायर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स doing excellent in their domain, then it obviously defines how successful and great that country would be. और अगर इसके हम अपोजिट साइड में बात करें, अगर एक ऐसा देश है जहाँ के लोग अपने काम को ड्यूटी को रिस्पॉन्सिबली फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो in my opinion that country might not get the sort of achievement that it seeks for or needs to. Secondly, if the subject of a country or people of a country showcase their willingness towards the excellence of society, then state also assists them in attaining their highest level of excellence and open new opportunities for them in every aspect possible. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि अगर मैं कुछ इनिशिएटिव्स के साथ इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करूँ, तो जैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से देखा हमने कि कैसे साइंस के क्षेत्र में DRDO एक ट्रिमेंडस वर्क कर रही है मेक इन इंडिया के लिए. जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि कम से कम इंपोर्ट करें हम अपने देश में और आत्मनिर्भर हो सके. अगर दूसरे इनिशिएटिव की मैं बात करूं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जहां पे हमारी गवर्नमेंट ने काफी सारे वेबसाइट्स और एप्स लॉन्च किए लोगों को जागरूक करने के लिए, जिसमें से एक ऐप का मैं नाम लेना चाहूंगा, भाषा संगम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ कोलैबोरेट करके बनाया, ताकि हमारे देश के लोग अपने डिफरेंट लैंग्वेजेस और कंट्री के डिफरेंट लैंग्वेजेस और कल्चर को जान सके, as it aims to foster the spirit of Ek Bharat Shresth Bharat by enabling people across India to learn different languages of different state of India and come closer to their culture. अगर सर मैं हमारे प्रधानमंत्री ने काफी जोर से स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, जैसा कि हम देख भी सकते हैं कि इंजीनियरिंग में उन्होंने हम जॉब के अलावा लोग स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी अब जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है. और द मोस्ट रिसेंट थिंग आई हैव गॉट टू नो इज कि हाल फिलहाल में मैंने परसों ही पढ़ा था कि हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू मेक अ मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम टू राइवल एंड्रॉयड एंड iOS. तो सर ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि देश में पहली बार एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की बात की गई है जो कि एंड्रॉयड और iOS को टक्कर दे सके, और अगर इस पे अच्छे से काम किया जाता है तो इन माय ओपिनियन सर इट विल ब्रिंग अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर IT सेक्टर इन आवर नेशन. सो लास्टली मैं अपने इस फंडामेंटल ड्यूटी को सपोर्ट के साथ द कंक्लूजन आई वुड से इज कि इफ द पीपल ऑफ आवर नेशन गो फॉर अपलिफ्टमेंट रादर देन सेटलमेंट. सर मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि हमने अपने देश में देखा ऑन एन एवरेज लोग सेटल होने की ज्यादा कोशिश करते हैं जॉब लेके, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, बट अगर हम सेटलमेंट के साथ साथ अपलिफ्टमेंट का भी देखें कि जॉब के साथ नए बिजनेसेस खोले या नए स्टार्टअप्स खोले, तो सर मेरे ख्याल से दिस विल बी हाई लेवल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आवर कंट्री, बिकॉज कि अगर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लाइक सुंदर पिचाई एंड सत्या नेडेला और डूइंग ट्रिमेंडस वर्क एंड प्रोवाइडिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू द कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल एंड मेकिंग आवर कंट्री प्राउड. तो सर आने वाले दिनों में ऐसे ही लोग जो भारत देश से निकलेंगे वो भारत देश में ही अपना योगदान देंगे, भारत देश में के प्रगतिशील कंपनियों में काम करके
which in my opinion will get this nation to a higher level of endeavor and achievement like never before. Thank you, sir. थैंक यू हर्ष, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने अपनी बात को रखी। हम इस 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो ओरिजिनल प्रपोजल था उसमें ये लास्ट था, उसमें कुछ शब्दों को अगर हम बहुत गौर से देखें तो हमको और बहुत अच्छा, जैसे हर्ष ने बताया, ये सारे शब्द हैं जिनको आपको बहुत ही क्लोजली देखना है। संविधान में एक एक शब्द का बहुत ही गूढ़ अर्थ होता है। तो स्ट्राइव करने का मतलब क्या है कि अपनी जान लगा देना, उसके लिए कुछ भी छोड़ना नहीं, जितनी भी ताकत है पूरी झोंक देना। और किस लिए? एक्सेलेंस। एक्सेलेंस क्या होता है? जहां भी हैं हम, जो भी हैं एज एन इंडिविजुअल, हम उससे आगे बढ़ें। आज तक हमारी जो समझ थी, कल हमारी समझ और अधिक होगी। आज हम जितना जानते हैं उससे हम अधिक जानें। कल जो जानते थे, आज हम आगे बढ़े हैं एक्सेलेंस की तरफ। नहीं, ये इंडिविजुअल जर्नी की बात है। ये नहीं कि हम किसी दूसरे से आगे गए, ये बात नहीं है। एक्सेलेंस का मतलब यह है कि हम जहां हैं, जिस स्थिति में, जो हमारी समझ है, जो हमारी समृद्धि है, उसी स्थिति में हम आगे अपने लिए बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। किसी दूसरे को पीछे छोड़ा है, ये बात यहाँ नहीं है। और ऑल स्फीयर्स, हमारी जरूरतें भौतिक और हमारी आध्यात्मिक जरूरतें हैं, तो वो दोनों स्फीयर में हमको आगे बढ़ना है। और सिर्फ हमें नहीं, बल्कि हम जिस समाज का भाग है, उस समाज को भी आगे बढ़ाने में काम करना है। तो इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटी में हमको एक्सेलेंस लाना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके लिए स्ट्राइव करना है, मतलब पूरी ताकत लगा देनी है, पूरी जान लगा देनी है। तो हम बहुत सारे टीम का पार्ट होते हैं, प्रोजेक्ट में रहते हैं, बड़े सारे टीम के साथ काम कर रहे होते हैं। प्रोफेशन कोई ज्वाइन करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे, तो वहाँ एक टीम में काम कर रहे हैं, तो वो कलेक्टिव एक्टिविटी है। और जो इंडिविजुअल एक्टिविटी है वो हम करते ही रहते हैं। तो इन दोनों स्फीयर्स में हमको पूरी जान लगा देना है, और वो एक्सेलेंस के लिए जान लगाना है, कंपटीशन के लिए नहीं। एक किसी को पीछे छोड़ना है इस भावना से नहीं, अपने को आगे बढ़ना है इस भावना से। और ये क्यों है, इसका रीजन भी इसमें दिया गया है, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। द नेशन मस्ट ग्रो, द नेशन मस्ट राइज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर्स एंड अचीवमेंट, and whatever contribution as an individual or part of a team we can make, we need to do that, we need to strive for that. तो ये बहुत ही important फंडामेंटल ड्यूटी है, और बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट भी है, जिसमें हमको खूब समझना है और उसको फॉलो करना है। तो थैंक यू हर्ष इस बात को बताने के लिए। Now we are moving towards the last point. I will not say that is last duty. It is last point written in the Constitution. So for that we have Rishal Gupta. She will be talking about the 11th fundamental duty. So Rishal, please unmute yourself. Sir, am I audible? Yes, very clearly. Please go ahead. Good afternoon to the respected teachers and dear friends present in this meeting to celebrate the greatness of Mahatma Gandhi on Shaheed Divas today. I would like to thank Anil Tiwari sir for providing me with the opportunity to speak and present my views on fundamental duties. The fundamental duties of citizens were added to the Constitution by the 42nd Amendment in 1976 upon the recommendations of the Swan Singh Committee that was constituted by the government earlier that year. There were originally 10 fundamental duties, which were then increased to 11 fundamental duties according to the 86th Amendment in 2022, which says and adds a duty on every parent or guardian to ensure that their child or ward was provided opportunities for education between the ages of 6 and 14 years. The other central obligations or fundamental duties commit all residents of the nation to regard the national symbols of India, including the Constitution,
to cherish its heritage, to preserve its composite culture, and assist in its defense. They additionally commit all Indians to promote the spirit of common brotherhood, protect the environment and public property, develop scientific temper, recant brutality, and endeavor towards brilliance in all circles of. If there occurs a violation of any fundamental duty by any citizen of India, including President, Vice President, Speaker, Members of Parliament, state legislative members, etc., it adds up to scorn of the Constitution, which is punishable under Prevention of Insults to National Honor Act 1971. Out of the 11 fundamental duties, if we talk about the last fundamental duties, which suggests or adds up a duty on every parent to provide education to their children between the ages of 6 and 14, we can say that the parents are liable to provide their children with education. Parents have become a little reluctant to grant their children basic education, which in turn leads to small children working in mines and factories or other workstations. This violates the saying that youth is the future of the nation. The children are forced to work at the stake of their future and dreams. The girls are often made to marry, and their future is sealed with a man who's much older than her. Most often, the girls, since uneducated and not knowing about the basic rights and wrongs, are tortured by the in-laws over dowry. They cannot fight for themselves and either end up being murdered or mentally and physically tortured, or even becoming a victim of marital rape in most cases. The boys have to work really hard, even when they know they do not have so much of intelligence and smartness that they can decide what is wrong and what is right for them, just in order to keep up with the expectations of their parents and to feed them. This all leads to the forgetting about how they can preserve their own childhood and focus on the ways by which they can make their parents at least satisfied. Most cases often include children becoming murderers and thieves. If children are exposed to basic education at least, they would be able to make a future for themselves and their family. Every child or even every citizen of India has the right to education. They would be able to fight for themselves and stand for their family. They won't be compromising over their childhood and their dreams, and would be able to actively participate in different situations. Hence, to follow and implement the slogan of Padhega India, Tabhi to Badhega India is and should be the moral duty of every citizen of India. Thank you. This fundamental duty is related to the education of children between the age of 6 and 14 years. And it is the responsibility of a parent or a guardian to provide opportunity for the child. As you see, initially it was part of Article 45 in the Directive Principles of State Policy. And in 2002, through 86th Amendment, that particular thing was included as fundamental rights as Article 21A, right to education. And in place of that, in Article 45, another provision was inserted, which I have just copied and put it here for your reflection. Now, the Article 45 says that the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. Now, look at this from the birth or even before the birth of a child, during the pregnancy, and then the birth of child and attaining up to the age of 6. Article 45 makes provision. And the state governments, the union government have made tremendous effort to ensure that this is reaching to the last person in the society. So Rishal pointed out very nicely that education is such an important issue, which must be ensured of every child to the nation. And it is through education we can know what is to be done, we can develop right understanding, and we can
follow it in our behavior. So these are the important things which need to be reminded of ourselves time and again. And therefore, I request all of you to please see the fundamental duties time and again, wherever you are. And if you see in our university, we have managed to place the fundamental duties at every important place in hostels and in academic area. And this is again to help you to be all the time careful about your duties. And it is that carefulness about our duties which ensures the rights of others. So we don't have to make any extra effort. If we just be aware of our duties, we are ensuring rights for others. Any violation of our right is because of the failure of duty on someone's part. So if we can ensure that each and every one of us is following the duty, there won't be any right violation of anyone. So with these words, I open this platform for all our audience. If any of you wants to reflect very briefly, because it is already 1:30. So for next 10 minutes, we can see if someone wants to share. So we can have 1 minute or 2 minutes for each. So you are most welcome to reflect and share your thoughts regarding Shahid Divas, the ideas of Mahatma Gandhi, and also fundamental duties. कोई है जो शेयर करना चाहे, कुछ अपनी बात कहना चाहे? I am glad to notice that more than 150 students are with us, and it is very encouraging for all of us. I must say thank you to all of you for being part of these many hours today. And I hope that each of us is taking away something from today's discussion. So since nobody has raised hand, so I believe that you are done. So let me then formally express my sense of gratitude to Shri Mata Vaishno Devi University for facilitating our discussion today on Shahid Divas. And on this very day, we have taken up each of the fundamental duties in little detail. And I hope that we hardly find occasion to do so. So I must thank all the speakers who took us to this journey. I thank Manvi, Hardik, Pooja, Akanksha, Ishani, Pratiksha, Mohit, Sumegha, Ayush. Vajahat could not speak because there is some problem in his mic, but I must thank him for willing to be the speaker. Bhumika Singh, Sweetie Pandey, who is from Amity. So we have got her presence here. Thank you, Sweetie, for being part of our discussion today. Then we have Shaili Pandey, Harsh Kumar, and Trishal Gupta. So all these 15 students spoke on this occasion. I am really grateful to all of you. I thank all my colleagues who could spare time to be with us today, and their presence motivated our students for participating in this event enthusiastically. So thank you very much, and I hope that you all have sent your name and details for your certificates. So within a week, I will manage to email you certificates regarding your participation, and those who presented their ideas, I will be giving them presentation certificate also. So with these words, I thank you all very much. And here I close this session. Thank you. Take care yourself well and your loved ones.